Ali Tour, who was also a complainant, stated that he no longer wants to pursue it. On our query regarding the attack on him, he stated that the facts as stated by him are correct, but stated that FIR registered in respect of the assault on him was not properly investigated. Mr. Imran Shafkat, the fifth complainant, is not in attendance, probably because he is living in Lahore. Your Lordship, he has instructed me, I'll pursue his case as well. He wants to pursue his case. ठीक, आप तो कह चुके हैं. अच्छा, you are also appearing for Mr. Amir Mir, sir. Who? नहीं, वो तो आपका कह चुके थे कल. जी सर. अब इसमें sorry Lordship, if we are proceeding on, करते रहिए, आप रुक गए. नहीं मैं रुक क्यों सर? ठीक है. हाँ. अब सर order if we are, ये अगर आप पूरा पढ़ लें, फिर आप पूरा पढ़े अपनी बात कर लीजिएगा. The complainants before us have stated that journalists were abducted and attacked, but these crimes were not properly investigated, including attack on Mr. Asad Ali Toor, Matiullah Jan, Imran Shafkat, and Amir Mir. Your Lordship, one person was missing yesterday. Absar Alam was also attacked. Okay, आपके सामने ही हमने पूछा था. बस लेंगे, ठीक है. Most probably they missed. The journalist is directed to file separate comprehensive report with regard to the police investigation of each case and whether charges are framed against anyone. Reports to be filed within 2 weeks. Mr. Toor alleged that those who carried out the attack on him themselves stated they were member of an intelligence agency under the control of federal government. The concerned investigation officer must be allowed to thoroughly investigate these crimes and given access to all concerned, and they must not be hampered in any way. The President of the Association and that of the Islamabad High Court Journalist Association, Mr. Fayaz Mahmood, have brought on record a joint resolution passed by the two associations on 27 January 2024, which state that the Federal Investigation Agency, the FIA, has issued notices to a journalist purportedly on the ground that judiciary was being maligned, and they apprehend that journalists will be arrested when they attend the office of the FIA. The learned Attorney General state that honest criticism, a judgment or an order is not a crime, and no coercive action will be taken, nor criminal case registered in this regard, and extend an undertaking on behalf of the federal government. 4. During the hearing, reference was made to the judgment of this court, PLD 2019, Supreme Court, page 318, wherein the founder of Pakistan was quoted, who wanted journalists to be responsible, independent, and fearless, and he had welcomed criticism as under. The power of the press is great, but you must remember that this power which you are wielding is a trust. Look upon it as a great trust and remember that you are guiding honestly and sincerely the progress and welfare of your nation. At the same time, I expect you to be completely fearless if I go wrong or if the leagues goes wrong in any direction of its policy or a program. I want you to criticize it honestly. The President of Supreme Court of Bar Association is present, and since the matter is one of the fundamental rights of the citizen, was asked if SCBA would assess the court, and he stated that he will do so to come up. अब आप पॉइंट क्या कहना चाह रहे हैं? मेरा पॉइंट ये सर, अगर SMC 4 is restored and we are arguing on that, your lordship order of if SMC 4 is restored and we are restored sir, उसमें एक जो it was never disposed of, it's pending. Yes, it was. Yes. जी, तो restored, there's no question of restoring it arises. I would like to, we were supported your lordship order of 2-member bench before the 5-member bench when they were passing an order. आज की बात बताएं ना. मैं आज की बात कर रहा हूँ. मैं आपका जो ऑर्डर था ना 2018-21 का, उसको अगर मुझे इजाजत में पढ़ लूँ, it was a very नहीं आपको पॉइंट बता दीजिए ना. पॉइंट सर ये बताता हूँ कि हमें पता है सारे ऑर्डर्स. जी सर, नहीं सर, वो जो आपने डायरेक्शन पास कर की है उस ऑर्डर के अंदर आया, उसकी कंप्लायंस हुई है या किस हद तक हुई है? द फेडरल गवर्नमेंट इज आंसरेबल टू दैट. ओके, एक सेकंड, कौन सा तारीख का ऑर्डर? ये 20 अगस्त 2021 2-member बेंच ऑर्डर, और ये बड़ा कम्प्रिहेंसिव योर लॉर्डशिप ऑर्डर है. एक सेकंड 20th अगस्त 2021. मुझे दिखा दें, मेरे पास 30 अगस्त से शुरू हो रहे हैं, पता नहीं क्यों.
चलिए आप बिस्मिल्लाह की Your Lordship. He ordered 20th August 2021. An application has been submitted in court by 5 working journalists, including the President of Press Association of Supreme Court and the former President of said association, alleging large-scale violation of fundamental rights enshrined in the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, the Constitution, and that the government and the organization agencies under its control are primarily violating these fundamental rights. Number 2, the applicants state that the journalists are harassed, intimidated, attacked, and shot at, and there are no consequences for the perpetrator, and it is further alleged that those who ये तो लंबा ऑर्डर है, जरा पॉइंट बता देना, इतना तो पूरा दिन ये तो निकल जाएगा। बेंच तो बन गई है ना इसके, अब आप इसको कोई वजह बता देना, ये पॉइंट वो पॉइंट है पेंडिंग, ये तो उसके बाद तो बेंच बन गई है, नहीं 5-6 पेज ऑर्डर है तो पूरा दिन निकल जाएगा इसमें। इसमें सर जो डायरेक्शन पास किए ना बेंच, नहीं डायरेक्शन आप बता दीजिए ना, बन गई ना, वो डायरेक्शन अभी भी हो सकती है, इसमें कैसी सी बात है। आप बताते रहिए, पेज नंबर 5 पैरा नंबर 5 से शुरू कर। सिर्फ बता दीजिए ना, आप खुद बताएं ना, क्या डायरेक्शन चाहिए सर, मैं पढ़ के बताऊंगा ज्यादा बेहतर। कमाल है, आप वकील को तो खुद बताना चाहिए ना, इसमें आप क्या, आपका नहीं सर, इसमें आपने जो ऑर्डर, आई डोंट नो व्हाट यू वांट, यू जस्ट से ये मुझे चाहिए, ये कर दें, वो कर दें, हम सुन लेंगे आपकी बात। योर लॉर्डशिप, मैं पैराग्राफ 6 आप पैराग्राफ छोड़िए ना, अपने तौर से बताइए ना कोई चीज। मैं ये बता रहा था, आप एक तो डायरेक्शन, यार हमें छोड़ दीजिए ना, आपका केस है या हमारा केस है? सर आपका केस में कहता हूँ, जो ऑर्डर आपने दिया है, डायरेक्शन दी है, आया वो कंप्लायंस, हम पूछ लेंगे उनसे, इतनी सी बात, इतनी लंबी तकरीर क्या करें, इनसे पूछ लेंगे, ये बता देंगे हुई है नहीं हुई है। अगला पॉइंट को बताएं ना। तो रिपोर्ट ऑलरेडी कॉल कर ली है ना, कल ही वो कह दिया था कि इन सारी इस ऑर्डर में और कल की रिपोर्ट में बड़ा डिफरेंस है। ये जो इन्वेस्टिगेशन जिन एफआईआरस पे हो रहा था, जो 4-5 एफआईआरस का तस्करा हुआ, उन पे तो इनको ऑलरेडी कहा है कि उस पे रिपोर्ट दे देंगे। पैरा 6 पढ़ लेता हूं, उस पे तो जो भी इस वक्त अपडेट है, जो भी प्रोग्रेस रिपोर्ट है, वो तो ये फाइल करेंगे। पैरा 6 पढ़ देता हूं, बस उसके आगे फिर मैं खत्म कर देता हूं, दो बातें करता हूं। The ever so frequent attacks on journalists and their abduction, including the Federal Capital Territory Islamabad, is another violation of fundamental rights, which has been raised in the application. It is stated that the Constitution in this Article 9. भाई अब आप देखिए ना, अब आपका you are in a way conflicted. You are yourself the government. ये एक से सुन तो ले ना। जी सर, जब जर्नलिस्ट से आप मिनिस्टर बन गए तो अब जिम्मेदारी तो आप पे भी हो गई, आप भी तो हुकूमत हैं। आप सर फेडरल गवर्नमेंट इज सुन तो लीजिए ना। जी सर, ये ऐसे तो नहीं होगा ना सर, हम मुझे समझ नहीं आ रहा है, हम जर्नलिस्ट की पिटीशन उठाते हैं, कुछ जर्नलिस्ट पीछे हट जाते हैं, भाई पता नहीं रीजन क्या है। अब आप कह रहे हैं हुकूमत से पूछें, किस हुकूमत से पूछें? बलूचिस्तान की हुकूमत से पूछें, फेडरल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान सर। तो फिर आप रेजिग्नेशन भी दे दीजिए साथ साथ। सर वो नहीं, अब जरा ऐसी आप बातें जो कर रहे हैं ना, मुझे समझ नहीं आ रहा है, आपका पॉइंट बता दीजिए ना। यू आर अब तो आप ही के खिलाफ हम ऑर्डर भी करेंगे ना। अब आप 2 टोपियां पहने हुए हैं, सर सोच लीजिए, आप पढ़ लें, चलें। मैं पैरा 6 चलिए। That ever so frequent attack on journalists and their abduction, including the Federal Capital Territory Islamabad, is another violation of fundamental right, which has been raised in the application. It is stated that the Constitution, its Article 19, हमें guarantees. ये पता है बात है ना, कोई पॉइंट बता दीजिए सर ये मैं सिर्फ सर मैं बाकी 2 मिनट लेता हूँ सर, मैं पैरा पढ़ लेता हूँ, इसके अंदर बड़ा हमें पता है, हम पढ़ के आते हैं कोर्ट। सर इसमें पढ़ लीजिए अगर आप तसल्ली। अटॉर्नी जनरल साहब, इस पे तो आपको डायरेक्शन कल वैसी मिल गई। सर ये लदी चीज है सर, काइंडली मुझे लेट मी रीड। आप बताना क्यों नहीं चाहते हैं हमें? मैं सर बता रहा हूँ, लेट मी रीड, अलाउ मी टू योर लॉर्डशिप काइंडली। It is stated that the Constitution in Article 9 guarantees the right to one's liberty, and Article 10 of the Constitution safeguard illegal arrest and detention. This matter becomes a matter of concern when the perpetrator are not arrested, and all the more so when it happens under the cameras of the Safe City project. This is a very important, Your Lordship. Islamabad inability in this regard may suggest incompetence, which may constitute dereliction of duty or far worse abetment, which is an offence. Therefore, notice be also issued to the Inspector General of Police Islamabad. पढ़ लिया हमने, पूरा पढ़ लिया, आपसे आगे हमने पढ़ लिया। And the आगे पॉइंट क्या है आपका? अब सर ये है कि द सेफ सिटी प्रोजेक्ट इस्लामाबाद में वर्क कर रहा है। आप हमें पॉइंट बता दीजिए प्लीज। पॉइंट ये है कि बिलियंस ऑफ रुपी हैज बीन स्पेंड ऑन द सेफ सिटी प्रोजेक्ट। जो भी जर्नलिस्ट के साथ मामलात हुए हैं इस्लामाबाद के अंदर, आप मुझे समझ नहीं आ रहा है, आप पॉइंट बता दीजिए प्लीज। पॉइंट बताएं, वकील का काम होता है पॉइंट बताना। पॉइंट ये बता रहा हूं, बिला वजह हमें तकरीर करना, हमने ऑलरेडी नोट कर लिए हैं बातें। ये नेक्सस बता दीजिए ना, सेफ सिटी प्रोजेक्ट्स का मकसद। सेफ सिटी प्रोजेक्ट का मकसद है कि जो लोग दिन दहाड़े अबडक्ट होते हैं, व्हाई द सेफ सिटी। भाई तो आप हुकूमत में हैं या नहीं? मैं सर मैं हाँ, आप मिनिस्टर हैं, जस्ट प्रोविंशियल केयर टेकर गवर्नमेंट में मिनिस्टर, पर यू कैन नॉट, यू आर हेल्पलेस।
सर इसमें तो पूरी You are helpless. यस ऑफ कोर्स मेरे खिलाफ एफआईआर है सर, आई एम हेल्पलेस, आई कैन नॉट इन क्वेश्चन Who is the mysterious persons running the country if you are helpless? everybody knows who is running the country. Don't say these things for a lawyer. It doesn't look good. Yes, of course. Either say I'm a डरपोक, I will not say this. ये क्या मजाक बनाया हुआ है सुप्रीम कोर्ट में? Everybody knows it. Then say it. Then say it. सर अगर if I'm a caretaker, Don't say this, please. Don't. इधर आप एक सेंसेशनलिज्म चाहते हैं तो कर लेते हैं. हम सीरियसली इस मैटर को अटेंड करना चाहते हैं. सर, हम भी seriously आपको assist सेंसेशनलिज्म करना चाहते हैं. Everybody knows it. पता नहीं, I don't know it. आप मुझे बता दीजिएगा. आप एक कंसाइज स्टेटमेंट फाइल कर दीजिए. हम सीख लेंगे आपसे कुछ. नहीं नहीं सर आपको Everybody knows it. भाई ये सुप्रीम कोर्ट, ये अदालत है, ये खड़ा नहीं है, ना पार्लियामान है, ना कोई प्रेस का कॉन्फ्रेंस. आप जाके कर लीजिए वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस जितने मर्जी है. अगर आप, हम तो कह रहे हैं आप मुल्क चला रहे हैं, आप मिनिस्टर हैं, या आप कह रहे हैं बस मैं कुर्सी पे बैठा हूं, मैं तो नहीं चला रहा हूं. सर मैं इधर ऐसी बातें आप कर रहे हैं. मतलब आप Minister of the head अपना ही अपने ही क्लाइंट के खिलाफ आर्ग्यूमेंट कर. खिलाफ की बात नहीं है सर, मैं हकीकत बता रहा हूँ जो आप अगर अच्छा बस आप बता सकते हैं हकीकत, लिख के देने के लिए तैयार नहीं है. मैं लिख के दे मैं दूंगा. हकीकत बताना चाहता हूँ क्योंकि किसी को नहीं पता आज तक. सबको पता है सर. मिनिस्टर बनने से पहले आपने ओथ लिया था. यस वो तो वो सर मैं देखिए ना मेरे खिलाफ एक एफआईआर. ये कानून की अदालत है, अगर कोई कानूनी बात करना चाहें तो कर दीजिए. हकीकतें हमें बताते रहिएगा, लिख कर दे दीजिए. आपको फाइल करना है, आज दिन तक आपने कुछ फाइल किया है? सर हकीकत तो यही है कि भाई हमें नहीं हकीकत का पता, हम जो चीज हमारे सामने आएगी उसका पता चल जाएगा. सर ये आपने खुद ही ऑर्डर पास किया होना, योर लॉर्डशिप. माशाल्लाह. जनाब उसके लिए आपको कई दफा कहा ना कि रिपोर्ट कॉल कर ली है कल इनसे. जो भी एफआईआर है उसकी जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है वो कॉल की है इनसे. सर ये जजमेंट है, मैं अगर आप कहते हैं प्लीज आप हमें जजमेंट बताइए. सर, वो एक दफा रिपोर्ट तो फाइल करने दीजिए अटॉर्नी जनरल को. जब वो फाइल कर देंगे उससे प्रोग्रेस रिपोर्ट पता चलेगी. फिर हम आगे जा सकते हैं ना. जिनकी एफआईआर जो कंप्लेनेंट है उनको कन्फ्रंट होगी ना वो रिपोर्ट, फिर वो बताएंगे कि उसमें इंक्वायरी हुई है नहीं हुई है, क्या इन्वेस्टिगेशन हुई है और आगे मामला कहाँ पे गया, कोर्ट में किस स्टेज पे है, ठीक है. चालान फाइल हुआ नहीं हुआ, क्या प्रोग्रेस रिपोर्ट है, ये तो ये बताएंगे ना पहले. लेट हिम फाइल द रिपोर्ट फर्स्ट ऑन दैट स्पेसिफिक एफआईआर. ठीक है सर, लेट देम फाइल. If I may, as a matter of procedure now, just something that I wish to draw your attention to. On 20th of August, a two-member bench headed by my Lord the Chief Justice Yes, passed the order. Now, after that order, 1 second, I just want to clarify something. कोई फाइलिंग्स हुई हैं आज कल? हाँ सर वो फाइलिंग इस वजह से नहीं हो सकी, हमें अभी तक वो लिस्ट ही नहीं देगी कि किन मेंबर्स के खिलाफ, किन जर्नलिस्ट के खिलाफ मुकदमा है. इंडिविजुअल नोटिस सर नहीं प्लीज हुआ आप अभी ट्राई तक. टू अंडरस्टैंड. मतलब प्रॉब्लम ये हो रहा है, nobody wants to do their work anymore. Please read the Supreme Court Practice and Procedure Act. सर हमने सीएमए बना के ये अगर आप बनाते रहे, हम लेकिन पता नहीं अब क्या करें. हमारे पास इनको लिस्ट नहीं दीजिए, थी. इस आप वजह से ठहर वो फाइल जाइए कर प्लीज. अटॉर्नी जनरल, my Lord, Adani, I don't know what's, we yesterday were very careful not to pass an order. Why? Because we were very cognizant of the Supreme Court Practice and Procedure Act. Just go through section कौन सा है इसका? Okay, section 3. my Lord. Read the section 3. Exercise of original I mean, jurisdiction if by the nobody Supreme wants to Court. have any concern with the law, I'm surprised. Any matter invoking exercise of original jurisdiction under clause 3 of Article 184 of the Constitution shall be first placed before the committee constituted under section 2 for examination. And if the committee is of the view that a question of public importance with reference to enforcement of any of the fundamental rights conferred by Chapter 1 or Part 2 of the Constitution is involved, it shall constitute a bench comprising not less than 3 judges of the Supreme Court of Pakistan, which may also include the members of the committee for adjudication of the matter. Now we are cognizant of it. This is the law of Pakistan. ठीक है. Now somebody comes and gives a piece of paper here. I mean, we would love to do it. We can't do it. That's why we took an undertaking from you. I did not pass an order against right. you. That's I mean, if people can't understand this, I don't know. It's very clear cut. And this is law has just been telecast to the whole of Pakistan. Now everybody should know about its provisions. Now, if someone doesn't want to do it, I mean, and just
नाउ प्लीज इट्स नॉट वेरी नहीं, एक सेकंड, एक और बात भी बता दें आपको, अभी इसी महीने हमने एक ऑर्डर पास किया है, देख लेना ये आप देख, ये इनको दे दें, उनको दें। एसएमजी वाले अब ये बेल मैटर में एक इशू रेज हुआ था, My lord. And प्लीज रीड पैराग्राफ My lord. 4 का एंड से पढ़ दें। G. We cannot ignore the above document, which had been produced before us in court, which purports to be a license of a submachine gun, SMG, which is a prohibited bore weapon. Notifications are also issued by the government exempting the requirement of obtaining licenses or permitting licenses for prohibited bore weapons to certain categories of persons, including chief justices, judges, ministers, parliamentarians, as mentioned in Schedule 1 of the Arms Rules 1924. Next para, the above has raised the following questions. One, under what legal authority had the Deputy Inspector General of Police, Mardan Region 1, Mardan, issued the said document which purports to be a license to carry an SMG, which is a prohibited bore weapon? Two, whether licenses of SMG and other prohibited bore weapons can be issued. Three, if the answer to the above is in the affirmative, the applicable law and procedure and the person who can issue exemptions oblique licenses. Four, the number of licenses, including permits, issued with regard to SMGs and other prohibited bore weapons. Five, the approximate number of SMGs and other prohibited bore weapons in private use in the country. Six, whether exempting certain categories of persons or granting them the right to obtain licenses for SMGs and other prohibited bore weapons accords with Article 25 of the Constitution, which mandates that all citizens are equal before the law. Seven, whether enabling the easy availability of SMGs and other prohibited bore weapons accords with Article 9, the fundamental right to life guaranteed by the Constitution. Next paragraph, 6. Now this is the important part. Yes. The office is directed to make a separate file and title it Submachine Guns and Other Prohibited Bore Weapons and register it as a constitution petition under Article 184(3) of the Constitution with regard to paragraph 4 onwards. The matter prima facie is one of public importance with regard to the enforcement of fundamental rights, including Articles 9 and 25 of the Constitution. Therefore, it be placed for consideration of the committee constituted under Supreme Court Practice and Procedure Act 2023. Now, but stop here. So yesterday's order, we had very aware that we are dealing with the case of the 2021 SMC 4, SMC 5, and CP 27. And incidentally, this matter came up about the Press Association of Pakistan. So we asked you, and you gave an undertaking on behalf of the federal government, which you are at liberty to do so. But it doesn't mean that the Supreme Court Practice and Procedure Act, which has just been upheld not very long ago, should not be complied with. This order that you read is 17th of January. That's right. And we were expecting something to come, some application and something. Despite that, we had made it clear that personal criticism of judgments is no issue, but we would want to attend to it in a serious manner. I mean, not somebody comes and throws one paper, somebody comes and says something. I mean, I don't know, sort of, I was duped into signing this petition. I don't know what's all these statements being made. I mean, if you file something, if you want to withdraw it, there's a procedure, you file something else. So, Shahzad Zohar Sahab, aap zara bataएं, because we consider this matter serious, but we cannot pass order till it goes through the committee first. That was the understanding yesterday, that they will file a separate application. You know, we were expecting it. I mean, if someone doesn't want to, we can't बात हुई force थी someone इनको to do प्रेसिडेंट so. साहब से कहा भी था कि कुछ चीजें रिकॉर्ड पे कोई सीएमए कोई चीज आप अब फाइल कोई कह कर रहा है जी दीजिए। हमें ये हो गया, हमें वो हो गया, जीआईटी बन गई है। भाई हमें शक्ल तो दिखा देना कोई कागज के टुकड़े की। जीआईटी बन गया, you should know. I mean, नहीं, हम नहीं चीजें देखते हैं भाई, हम जो हमारे सामने आता है ये पहले चीजें होती गई थी। हमें एतराफ करने में कोई बात नहीं, मगर जब तक इन चीजों का तरीकेकार नहीं तयन हुआ था कि भाई सुप्रीम कोर्ट ले सकती है, चीफ जस्टिस ले सकते हैं, कौन ले सकता है। अब तो कानून ने तयन कर दिया है ना, और वो कानून हमने कहा सही है। अब ठीक है, बात अहम बात है, हम ले लें, हमें बता दीजिए, कमेटी के पास चला जाएगा।
आ जाएगा, मगर अगर सीरियसली इसको लेना चाह रहे हैं, अगर एक कोई कागज उधर से दे रहा है उधर से दे रहा है, हम आगे बढ़ें कैसे? हम आई डोंट नो कैसे बढ़े हम। सुमोटो लेंगे फिर आप ही हम पे इतराज करेंगे कि जी आप ही अपना जो कानून आपने अपहोल्ड किया उसी को आप वायलेट कर रहे हो। तो ये देखिए ये बड़ा मुश्किल, अब जरा हम कानून पे चलना चाहते हैं। जीआईटी का कोई नोटिफिकेशन भी इशू हुआ अभी होगा? हमें क्या पता, हमें कोई किधर से पता होगा? वो कल को अटॉर्नी जनरल हम पे इतराज कर देंगे जी आपको क्या पता। जी, कोई जो लाएगा बहुत जरूरी कागज का है। टुकड़ा तो लिया है सामने एक। जीआईटी का नोटिफिकेशन इसलिए भी जरूरी है कि इन विच लॉ द जीआईटी हैज बीन भाई कॉन्स्टिट्यूटेड। एक सवाल से सवाल उठेंगे भाई जी। अब एटीसी के लॉ में तो है। अब कोई आके भाई जी मुझ पे बड़ा भाई हम केस जो हमारे सामने हम उस पे तो हमने ऑर्डर कर दिया, हमने डायरेक्शन भी दे दी, बाकी चीजों की चलें इनकी बात का नोट भी कर लिया। अटॉर्नी जनरल गिव एन अंडरटेकिंग, वो तो उनके हद तक है, मगर अब हुक्म हम कैसे करें इस बात पे, मजीद कैसे चलाएं? या तो हम खुद इसको क्या करें? सुमोटो भी हमारे पास अख्तियार अब नहीं उसका है। नोटिफिकेशन और जो नोटिस इशू हैं, कोई मॉडल सैंपल नोटिस किसी एक का भी होता तो वो उससे आपको पता चलता है कि इन विच लॉ द जीआईटी हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड एंड व्हाट एक्चुअली दे आर गोइंग टू इंक्वायर फ्रॉम द Precisely. And जर्नलिस्ट। then, my lord, जी हमें आपकी जरा ताउन की जरूरत है ना, बिकॉज जी हम तो मैं तो जनाब क्या हाउ डू वी हम कंसर्न्ड है, मगर कोई तरीकाकार तो अपना लेना। the only way forward is that either they move a proper application attaching those notifications and notices so that और ये जो प्रेसिडेंट साहब आपके ना, ये जैसे भी कह रहे थे कि हमें लिस्ट नहीं मिली, बात ये कि वो तो लिस्ट दें ना दें, आपको अपने पास तो पता है ना आपके मेंबरान कितने उनको वो नोटिस इशू हैं, तो वो मेंबरान से तो वैसे भी नाम खुद पता कर सकते हैं। देयर इज नो नीड के उसमें जरूरी किसी को तो आई होगी ना। जी but यही शायद पाकिस्तान में किसी को आया ही नहीं नोटिस, फिर उसका मतलब वो नोटिस ही फेक कल है। रात तक I was under the impression that such an application will be filed and a copy thereof will be देखिए ये supplied जो to the आपको अभी चीफ जस्टिस साहब ने इसका एक्ट का जिक्र किया है ना, अब ये अपीलेबल ऑर्डर हो गए सारे, जी ऐसी है। तो अब हम यहाँ पे बैठ के कुछ करें उसकी भी अपील होगी। अब इंट्राकोर्ट अपील का besides जो my lord, कॉन्सेप्ट है वो it has- ऑलरेडी अब आपको पता है ना वो रिवाइव हो गया है। Firstly, it has to go to the committee first. That is the first thing that happens here. नहीं, कल भी heard it a lot। आज हमने adjourn किया, भाई हमने कोई तारीख नहीं दे दी, कोई महीने बर्बाद की। we can't tell somebody to do something, we can only kind of it's obvious and say it. So I don't know how to proceed further in the matter, because undertaking is there of the Attorney General. You are standing by your undertaking. कल होएगा, कोई गया है कोई वहाँ पे एफआईए के सामने? Sir, nahin, kal I had asked the JIT to not not to press with the notices yesterday because most of them were here and the court proceedings were underway. So they were adjourned till today, sir. Well, they And intend depending to on how file the it today. proceedings go, we'll So give the latitude. once the application Refer is it to before another day. So ये देखें वो कल था, उन्होंने कहा तो वो एडजर्न हो गया आज के लिए। अगर तो आप कोई चीज फाइल करते हैं तो टिल सच टाइम आप उनको रोक देंगे, वो ना कोई भी फिलहाल करे मीटिंग। आप just- अंडरस्टैंडिंग क्यों? We just used our good offices. We even said, have a meeting. But we can't pass an order, a direction. There's a big difference. Attorney General may do it, he may not do it. So we can only request him. There's a very different thing. We can direct him, and a request is a very different thing. 3-4 दिन 2-3 दिन में आप फाइल कर दीजिए। But I don't know how we बड़ा मसला है proceed फाइल with what matter. सर सीएमए सीएमए तैयार कर ली गई थी, सिर्फ लिस्ट की अवेटेड थी, हमें कल दी जानी थी, नहीं दी गई, फिर हमने सुबह तक इंतजार किया, नहीं दी गई। अभी सर अगर आप हमें अच्छा 10 मिनट भी दे सुन देंगे। लीजिए, वो क्या मैं नहीं देता आपको लिस्ट। लिस्ट की जरूरत नहीं, आप अपने नाम टाइप कर भाई किसी एक को तो नोटिस आया होगा ना पाकिस्तान में। सर वो नोटिस हमारे पास है, सर सीएमए भी तैयार है, सिर्फ 10 मिनट दे दें। उनकी लिस्ट आप खुद टाइप कर दीजिए ना कि इतने साथियों को आई है, वो ना दे लिस्ट आपको तो वो कोई सर्टिफाइड कॉपी वो आपको फैसिलिटेट करेंगे तो नहीं इस मामले जरूरी नहीं है ना वो सर अगर 10 मिनट की कोर्ट या तो इसमें हेयरिंग में वक्फा कर ले, हम फाइल कर देंगे क्योंकि सब कुछ तैयार है। करें, हम आपको मना नहीं करेंगे, मगर हम इशू सर सिर्फ ये सीए में नहीं होगी, वो पिटीशन होगी। Petition will have to be brought. सारे ऑर्डर अब A अपील petition will have to be brought under 184. The matter will have to go to the committee and then the committee has to then. आपको उसको टाइटल चेंज कर दो। अभी ये मैटर था पेंडिंग, तो इसमें कम से कम कुछ प्रोग्रेस हम कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। सर दो ठीक है। चीजें हैं, अगर सीएमए होगी तो वो जाहिर बात है सिर्फ नोटिस की आता है, पटिशन होगी, पटिशन तो भाई फिर माशाल्लाह आप लोग तो हमसे ज्यादा कानून आजकल जानते हैं, ठीक है, तो आप ही कर लें, क्योंकि अब वो जमाना चला गया कि वकील से थोड़ा मशवरा कर लो। आई एम श्योर
शहजाद शौकत साहब से बात करेंगे, वो आपसे कोई फीस नहीं तलब बताया ना, ये करेंगे। सारे ऑर्डर अपीलेबल हो गए अब ये इंट्रा कोर्ट अपील तो में। अब हम अपने ही कानून को वायलेट करने चल पड़े तो आप भी लोग हम पे तनकीद शुरू कर देंगे। हमें तनकीद से इतराज नहीं है, मगर कानून की वायलेशन से बिल्कुल इतराज है। तो actually I was expecting some applications, no application has coming forward. My lord, with your permission. आप भी आ गए। My lord. I don't know. सर मेरी रिक्वेस्ट ये है, सिर्फ 7 दिन रह गए हैं इलेक्शन में, तो कोई जल्दी नहीं है। आई डोंट नो क्यों हमारे इदारे इतनी जल्दी में है कि ये ये कानून आपस में बात करें ना, आपके दारो आपकी बस सर सिर्फ मसले 7 डेज का अगर हमें इलेक्शन के बाद तक के मैटर पेंड कर दें, ये पूरा प्रोसेस। देखिए आई थिंक ये मीडिया को कंट्रोल करने के लिए इलेक्शन के बाद crucial moment पे- तकरीर ना करें प्लीज। अगर आपको कुछ कहना है लिख के दे दीजिए, ठीक है सर। ठीक है। हम ये हम फोरम इस्तेमाल नहीं करेंगे कि आकर के कल का अखबार में खबर लग Sir, this is जाए। about- आप लिख कर दे दीजिए तो हम इनसे पूछ भी सकते हैं, जिससे पूछना उससे पूछ लेंगे। सिस्टम तो हम बनाए ना, सही तरह से सिस्टम बने। थैंक यू तो अगर आप इनको परसुएट करें सदर साहब को, वो हमें कोई जल्दी हम समझे तो वो कयूम सिद्दीकी साहब का वाला केस और वो हैदर साहब का, वही हैदर। अच्छा आए हुए हैं आप आपको टाइम मिल रहा है ना, 184 में कन्वर्ट कर दो इसको। हमें अगर वो फाइल भी होगा तो हमें कमेटी के पास जाती है। हम भी तो हम चाह रहे थे सिर्फ नोटिस की हद तक अगर हो। वो कर रहे हैं ना, वो तो अभी उन्होंने रोक दिया ना मामले को। सर आज भी बुलाया गया था। वो भी देख रहे फिर आप वही हैं। बात Don't worry करते हैं। about अच्छा it. अब ये हमें एक तरफ से बता दें, हम कानून पे अमल करेंगे ना, सिर्फ ये बता दें। सर इलेक्शन के बाद भी हो सकता है कानून पे बिल्कुल हो सकता है, हम कब कह रहे हैं। सर इलेक्शन इज अ क्रूशियल मोमेंट, मीडिया को सारे लोगों को कंट्रोल किया जा रहा है सर। फिर आप सिर्फ 7 दिन की बात है। वही साहब आप यू आर हियर, इट्स गुड। So we can take up your petition and the other 2 petitions, and we can, I don't know, whenever they file, it will immediately go to the committee. The committee generally meets on a Thursday, unless there is some reason why judges are not available. So because these 3 judges are not the committee. Committees are different. The 3 senior judges of the committee. My lord, my petition actually just merely seeks a balancing of the constitutional rights. It talks about how there is already a Supreme No, Court. what do you want us to do? That's, I mean, I've read your My lord, we have- petition. It's very good, but what My sort lord, of we have- order would you want us to My lord, pass? I've just, in especially these circumstances, the only thing that we are pressing is कि a code of conduct से Supreme Court का ordered ही approved a code of conduct बना था for broadcast media. अब सर Article 19 जो है, it clearly covers content. It doesn't cover one medium to the exclusion of other mediums. It talks about speech overall. But what we have right now is that broadcast media is regulated completely differently. So whatever you can't say on broadcast media, you're able to say on vlog, which makes no sense because Article 19 is equally covers content on any medium. अब मैं ये नहीं कह रहा कि जो broadcast media पे आप नहीं कह सकते। What do you want us to do? Yeah, The code of like it happened last time, perhaps a direction can be given कि stakeholders बैठ जाएं federal government के साथ और code of conduct जो already बना हुआ है और एक सर कानून भी बनाया था उन्होंने एक unit Which law the code of conduct will be made? In जी which सर law? code of conduct can the Supreme Court pass such an order? सर पहले भी किया सर ये नहीं आपका ऑर्डर ये नहीं होगा कि हमें legislate मदद कीजिए ना। कैमरा का जो कोड ऑफ कंडक्ट जी। है वो तो मेरे ख्याल है चैलेंज हुआ था, उसपे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अच्छा ठीक है इसको मिलके इसका तो जी। कोड ऑफ कंडक्ट कैमरा का 2001 के ऑर्डिनेंस के तहत बिल्कुल बना हुआ ठीक है सर तो बट वो सर तो हुआ पुरानी क्या चीज है, उसके अंदर इतराजात हुए थे मीडिया को, उस पे वो सिर्फ चैलेंज चल रहा था सर, कि but ये हुआ क्या उससे? आर्टिकल 19 के अगेंस्ट है। उस पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई मिल बैठ के आप कोई कर ले, तो वो एक सेल्फ इम्पोज जो रूल्स एंड रिस्ट्रिक्शंस Sir, वो बनाए गए। basically, I'm seeking a level playing field. All I'm really saying is कि सर उस वक्त अगर equally regulation होती या I won't even call it regulation because it's also protection of speech really. It is protection of speech. Sir, I'm अगर asking वहाँ- you a different question. You are arguing your case. Sir, I'm One second. Sir, I am saying What- that no, such a just direction hear can me. be given because it's enforcement of What constitutional rights. order should be passed? Just a simple question. That the You federal- are arguing a matter. That the federal government, my humble prayer is that the federal government be directed to sit with stakeholders and make for the same kind of code of conduct that they made for broadcast media to Now, enforce please- Article 19. Fine, wishes, if wishes can be, what do they say? Now, please tell us, can we pass such an order? I would believe that's enforcement. Not I, never, you should never begin with a thing with I. Refer to the law. Can we do it?
should assist us now. My lord, certainly this honorable court can enforce Like we can constitutional rights. request the Attorney General meet the President of the Supreme Court. We can certainly do that, but can we pass an order directing? That's a big difference. सर अगर ये भी हो जाए तो ये खुद भी सब तैयार No, हो देखिए, there must be some law for regulating the YouTube. If there is no law, then there is no the rules, there's no सर लॉ है एक सेकंड ये बात कर रहे हैं हाँ। जी सर बात ये enforcement of constitutional right के लिए certain कैमरा है can be उसको issued. उन्होंने रेगुलेट किया है ऑर्डिनेंस के तहत ना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी ऑर्डिनेंस 2002 जी। का ही है तो उसके अंदर वो चीजें बन रही जी। है ना इफ देयर सम लॉ दैट शुड बी रेगुलेटेड और शुड रेगुलेट द सर है डिजिटल मीडिया पे लॉ है डिजिटल मीडिया पे पाकिस्तान में कौन सा लॉ ये बताइए ना सर- उसके उसके petition ऊपर में सारे mentioned कोर्सिव एक्शन लेने के लिए तो है उसको रेगुलेट करने के लिए नहीं है ना आपका में आप उसको कर तो रहे हैं बट वो आप हाउ टू रेगुलेट द यूट्यूब ये तो बताइए आप My lord, there are laws. The only problem is that they don't come with specificity, and they are more on the criminal side. And problem होती है कि कोई gray area नहीं है. या तो they say wild things on digital media, and wilder things happen to them. And that's the problem, isn't it? Because there isn't that legal framework. देखिए इलेक्ट्रॉनिक That मीडिया या यूट्यूब वो 2002 का जो डिफेमेशन ऑर्डिनेंस है उसमें तो कवर होते हैं बिकॉज सर, जैसे पब्लिकेशन removal- का मतलब इंटरनेट भी है उसके सर पेज 15 पे मैंने वैसे टेबल लगाई हुई है सारे लॉज की पेज 15 पे सर अगर आप नंबर 3 पे देखेंगे सो देयर इज दैट रिमूवल एंड ब्लॉकिंग ऑफ अनलॉफुल ऑनलाइन कंटेंट प्रोसीजर ओवरसाइट एंड सेफगार्ड रूल्स ऑफ 2020 अच्छा ये पेज 15 है पिटीशन की दिस इज नाउ कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन 27 ऑफ 2022 नहीं वो लॉ कौन से आप कह रहे हैं सर ये है रिमूवल एंड जब ब्लॉकिंग आपकी जो फर्स्ट प्रेयर है ना My lord. directs the federal government to prepare and implement specific code of conduct. Tomorrow you will be the first to criticize us that this is amounts to censorship. Okay, and the Supreme Court had no jurisdiction. Please assist us on these points. My lord. I mean, what power are we exercising? Are we legislating? Are we interpreting a law? Yes, we can do that. If there's some provision in the law, we can maybe interpret it in your favor. But if there's no provision in the law My lord, my or in the humble- Constitution, how do we go ahead with it? We can certainly request all stakeholders to meet and come up with a code of conduct. So, but does it translate into a binding judgment of the Supreme Court that can be acted upon then or not? If someone says, I won't, then federal government says, I won't do it. Then what do? My lord, we my issue them a contempt notice on what My lord, basis? On a wish. My lord, my humble submission is that the enforcement of constitutional rights like Article 19, which not only put restrictions, but For that, inherently the नहीं, regulation is required. आप थोड़ा हाँ सॉरी सो आर्टिकल Sir, अभी तो सर आप जिस तरह आपने बात की, I think from whatever casual talk I've had with everyone is ready to sit down and talk about it. We can start with that. Not in this case, my lord. Not in this एक case. सेकंड My lord, with your permission. एक सेकंड मती साहब ये बात कर रहे हैं ना थोड़ा सा हम एक दूसरे का लिहाज तो रखें ना हैदर वहीद साहब देखिए अगर आपको कैजुअल टॉक्स करना है तो पिटीशन लाने की तो कोई जरूरत नहीं नहीं है सर, ना मैं कह रहा था तो आपको कौन मना कर रहा है आपकी पिटीशन देखिए पेंडिंग है 22 से 2022 से जी सर। ठीक है हम 24 में आ गए जी। जितनी मर्जी आप टॉक्स कर रहे हैं आपको कोई मना कर रहा है हम पूछ रहे हैं कि अदालत क्या कर सकती है आपकी मदद चलें ये भी कर लें मदद भी करना चाहते हैं हम करें कैसे Lord, ये बताएं हम किस किस्म का ऑर्डर पास करें My lord, my humble submission is that the enforcement of Article 19 and the एक cognizance. बताएं ना आपने अच्छा इन्फोर्समेंट ऑफ विच प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 19 ये भी आप देखिए ऐसे गोल ऐसे ना कर दें ना आर्टिकल 19 में सर, बहुत कुछ लिखा हुआ मैं क्या कह रहा हूँ सर मैं कह रहा हूँ रीड आर्टिकल 19 My lord. ये आपने लगाई है कॉपी आपको एक मिनट से मैं वैसे पूछ रहा हूँ इन द मीनवाइल में पढ़ लूँ ये रिमूवर एंड ब्लॉकिंग ऑफ अनलॉफुल ऑनलाइन कंटेंट प्रोसीजर ओवरसाइट एंड सेफगार्ड रूल्स 2021 My lord, I'm just going to provide, sir, I'll provide. ऐसे किताब में पैमरा लॉज के ये आप बता जी, दीजिए सर। क्या सर। कौन सी आर्टिकल 19 में एक पार्ट है जो कि इजाजत देता है दूसरा पार्ट है जिसमें ममानियत है Subject आप to ममानियत reason. कर रहे हैं या इजाजत वाली बात कर रहे सर मैं कह रहा हूँ हैं आर्टिकल आप कह नहीं कानून क्या कह रहे हैं My lord, कानून ये कहता आप है पढ़ लीजिए जी प्लीज सर मैं आर्टिकल आजकल फैशन हो गया बगैर पढ़े चीजें आर्ग्यू करो
भाई देखिए आर्टिकल 19 के दो पहलू हैं, एक पहलू कहता है सबको इजाजत है, फिर उसके बाद वो जाके रुकावट डाल देता है। Subject to reasonable Hello, restrictions. I'll read Article 19. with हाँ my तो lord's अब हमें आप कह रहे हैं आर्टिकल 19 को इन्फोर्स करें तो कौन सा पहलू, दोनों पहलू So, करें, मेरा एक कहना ये पहलू कि आप जी मैं पढ़ लीजिए देता हूं ना। सबसे पहले। Freedom of speech. Every citizen shall have the right to freedom of speech and expression, and there shall be freedom of the press, subject to any reasonable restrictions imposed by law, in the interest of the glory of Islam or the integrity, security, or the defense. एक सेकेंड, एक हो गया इंटरेस्ट ऑफ द ग्लोरी ऑफ इस्लाम, पहला रुकावट, दूसरा इंटेग्रिटी, सिक्योरिटी और डिफेंस। चलिए इसको एक ही अब तस्वुर कर लेते हैं, दो Or any part thereof, friendly relations. ये हो गया, with तीसरा foreign रुकावट आ गई, states, तीसरी रुकावट आ गई, public order, ये चौथी रुकावट आ गई, contempt of court, decency or morality, इसको पांचवी रुकावट कर लें, or in relation to contempt of court, the छठी commission रुकावट, of or incitement to an offense. तो सात रुकावटें आ गई। आईन ने बनाई है, जरा ये हम वजाहत करते चलें, हमने नहीं बनाई है। बिल्कुल। ठीक है, अब आप जब कह रहे हैं इन्फोर्समेंट ऑफ आर्टिकल 19, तो अब आप बताइए कि आप फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं, फ्रीडम ऑफ द प्रेस की बात कर रहे हैं, जो दो राइट्स दी गई हैं, फिर इसमें ये आ गए रिस्ट्रिक्शंस। तो आप ये सिर्फ ये बात करना कि आर्टिकल 19 की इन्फोर्समेंट से मुराद आपकी क्या है? My lord, my humble submission is that the entire article is being applied to broadcast media, but not to digital media. नहीं, आप We तो- agree. What do we do? आप तो ये चाहते हैं कि इसको रेगुलेट किया जाए ना, हाँ? यू वांट के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ये जो यूट्यूब है, इसको रेगुलेट किया जाए, ये आप कह रहे हैं ना। So मैं कह रहा हूँ जो कोड ऑफ कॉन्डक्ट एक बना हुआ है, सुप्रीम कोर्ट अप्रूव्ड है, उसको जो है डायरेक्ट किया भी जाए, apply स्टेकहोल्डर्स करें। बैठ के वो कोड ऑफ अब कॉन्डक्ट। आपने जो बात कर दी ना, सुप्रीम कोर्ट अप्रूव, चलिए कानून की बातें कर लेते हैं ना। नहीं वो नहीं, आप सिर्फ ये बताइए, माशाल्लाह you're a senior constitutional lawyer. Now, what do we do? We agree with you. Let's even go that far. How do we do it? After all, everything must be done in a particular way. Yes, my lord, to enforce constitutional rights of Article 19 and 25, and in keeping with balancing of constitutional rights, a direction can be given to the federal government. It is after all an executive. You're not asking for legislature to make law. A direction can be given to the federal government that made the first code in any case. It was the federal government. One second, please argue this case. I don't know what that case is or what the No, yeah. first case is. Please argue this case. Okay, let's go step by step. Okay, let's assume this direction is given. Second assumption is, let's assume federal government does what? It sits with stakeholders and makes a code of Stakeholder is conduct. who? It can be journalists, lawyers, they can decide. sir. Please देखिए ना, don't just So, say. आपका direction तो सर नहीं, federal नहीं, आप government को ये देखिए ना, ये स्टेक होल्डर्स वो अपने चार दोस्तों को बिठा लेंगे अपने साथ, हाँ जी ये स्टेक होल्डर्स हैं। But that wouldn't be the right अब आप ये ऐसी बातें जब आप करें, कोई चीज लाए अदालत, तो सोच समझ के करें ना कि ये अब बता दीजिए वो क्या हम करें आगे। पार्लियामेंट हैज टू मेक द लॉ। अब तो फिर वो पार्लियामेंट कल हम पे करेगी जी सुप्रीम कोर्ट ने हमारे इख्तियार इस्तेमाल कर लिए, ये हमारा काम है। तो ये दरख्वास्त आप अगर सारे मेंबरान पार्लियामेंट को भी आने वाली है, उनको भेज दीजिए, शायद तो बना दें आपके लिए कानून, हमें नहीं पता। सर मैं लेजिस्लेचर के लिए डायरेक्शन नहीं मांग रहा, मैं फेडरल गवर्नमेंट के लिए कह रहा हूँ कि वो कोर्ट उन्होंने पहले भी ब्रॉडकास्ट का बनाया, डिजिटल का भी बना दे। के लिए सर, कोई सपोर्ट ऑफ लॉ तो चाहिए अच्छा, ना। अगर अटॉर्नी जनरल ने बात कही तो नहीं है, अगर उन्होंने कह दी हम नहीं करते या हम आइन के ताबे हैं और हमारे पास ये इख्तियार ही नहीं है। सर पीटीए एक्ट और पीका में बन सकते हैं, ये अंडर रूल्स बनाने की जहाँ पावर है वो गवर्नमेंट ऑलरेडी जर्नलिस्ट को जो है जिस तरह से हैक कर रही है। एक सेकंड आप सुनेंगे ना जरा इनकी बात। नहीं, आप लोग तशरीफ रखें 2 मिनट, हम जरा कयूम साहब जरा आप दोनों तशरीफ रखें, एक एक को सुनेंगे, आप कोई फिक्र ना करें, कोई नहीं जाएगा जिसको नहीं सुने। My lord, so my lord, there is statutory law under which this code can be made. Exactly, देखिए you have hit the nail on the head. There is statutory law. To give us some statute to help you. Yes. पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो है, Sir, I would rely on the PTA Act. But it took a long time to come here. Selling. Gee, with the provision, read it. Yes, provision.
Malord, इसमें I will, however, submit, and this is. No, let's read जी it. सर वो उस पे आ रहा हूँ. So it seems I'm just making a submission, sir. है उसके अंदर. जी, Any kind of sir, law I'm just making a submission that at this point in this environment, it seems like everyone is very sensitive about this environment. ये कोर्ट तो सर अगले 6 दिन में वैसे भी नहीं बनेगा. Forget it, the environment. We decide cases, we don't care about environment. मैं तो सर अपना You like our decision, you don't like it, fine. नहीं सर मैं तो इस environment में आप concessionary नहीं देखिए, बात कर रहा हूँ. अब आप ये कह रहे हैं कि मैं environment को देखते हुए फैसला नहीं सर मैं कह रहा हूँ मैं तो कंसेशनरी बात एज अ पिटिशनर कर रहा हूँ कि मैं तो इस चीज के लिए बताया क्योंकि 6 दिन में तो कोर्ट वैसे भी नहीं बनेगा. अगर ये चाहें तो रख लें बाद में 8 तारीख के बाद क्योंकि दिस इज समथिंग व्हिच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू बट नॉट हम नेसेसरली आपसे समथिंग फॉर इनकार कब कर रहे हैं? जी सर. हम आपसे इनकार कब कर रहे हैं? हम सिर्फ कह रहे हैं हमें तरीकेकार जी बताइए. सर. हम अगर आपसे इनकार कर रहे होते कि इम्पोर्टेंट नहीं है तो ठीक है, सर, मैं अलग बात है. अभी तो आपसे कह रहे हैं चले मफरूजे के तौर पे हम आपसे अग्री कर रहे हैं. मैं इसमें सर एक जो है वो सारे कवानीन जो इनेबलिंग प्रोविजंस हैं जिसके तहत कोर्ट बन सकता है टू एनफोर्स दीज कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स सर वो एक आपको रिटर्न सबमिट कर देता हूँ कि ताकि जो आप कर दें, जी, आपको मैं कर- टाइम चाहिए, जी सर वक्त चाहिए. जी सर मैं सबमिट कर दूंगा सर. जी अच्छा चलिए ठीक है. फिर अगर आपको वक्त चाहिए, अगर ये जरा ये हमारी रहनुमाई कीजिए. बिल्कुल ठीक. क्योंकि वकील का काम होता है आईन और कानून के हवाले से रहनुमाई करे जज. Of course. But all enabling मेरे provisions ख्याल में ये होना चाहिए और मेरे ख्याल में मैं भी बहुत सारे ख्यालात रखता हूँ मगर ताबे हूँ आईन और कानून के. बिल्कुल ठीक ठीक है. आप कितना वक्त चाहिए आपको ये चीज करने में? सर आई थिंक 10 days 1 week ठीक है. elections are- एक दरख्वास्त आ रही कि इलेक्शन के बाद करने, हम इनसे भी पूछ बिल्कुल लेते हैं. ठीक है सर ऐसे ही ठीक है. कर मैं क्योंकि ये देखें ये जल्दबाजी में ऐसी चीजें नहीं करना चाहिए. बिल्कुल अब इतना अरसा गुजरा है, जहां तक वो स्पेसिफिक केसेस थे वो तो हमने उनको कह दिया हमें रिपोर्ट दीजिए. हम अगर कोई ऐसी स्पेसिफिक चीजें वो फौरन कर देते हैं. अगर कोई एक देखिए इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ जजमेंट वो कमिट अगर शायद हो सकता है इनकी भी दरखास्त आ जाए, फिर 184 की कमेटी में भी चला जाता है, फिर उसको भी लगा देते हैं. चलिए अब आप बात कर रहे थे, मतीउल्लाह जहां साहब तशरीफ लाइए. थैंक यू माय लॉर्ड. मेरी पहली रिक्वेस्ट तो ये है कि ये जो कोड ऑफ कंडक्ट की इशू है या पिटीशन है इसको क्लब ना करें हमारे इस प्रेजेंट केस के साथ, बिकॉज देयर इज अ कोर्सिव एनवायरनमेंट और इस कोर्सिव एनवायरनमेंट में किसी किस्म के ज़ाब्ता इख्तिलाफ की बात जो है prejudice करेगी हमारे merits of the case को. एक सेकंड आपको एक बात रोक लूं. ये जो केसेस हैं 3 केसेस हमने कुछ क्लब नहीं किए, ये चले आ रहे हैं 7. ये कम से कम हमें ना कहे कि हमने क्लब किए क्योंकि चले आ रहे हैं 7. अब इसको डी लिंक करना होगा. जी सर. अब कोई किसी की दरखास्त आएगी हम देख लेंगे. इस मौके पे ये क्लब्ड हैं. काफी ऑर्डर्स भी पास हुए हैं. तो अब हम ये अच्छा ठीक है, अगर आपको दरखास्त देना आप दे दीजिए कि आप इसको कर लें. तो कम से कम अब क्यों क्लब हुए मुझे सारे ऑर्डर पीछे पढ़ना होंगे कि वजह क्या थी. अच्छा दूसरी बात भी तो ये कि आपको सर दूसरी बात भी कर दूं. कल आपने एक बात उठाई थी कोर्ट में, हमने फिर भी सुन लिया. आपने जिक्र किए थे एक सहाफी का केस अरशद शरीफ. Yes, sir. वो मैंने चेक किया, वो 5 मेंबर बेंच के पास चल रहा था. Right. अब क्यों चल रहा था 5 मेंबर बेंच के, क्या वो चेंज होके 3 मेंबर बेंच के पास हो सकता है? अब वो इतना वक्त नहीं था क्योंकि उसमें बहुत सारे ऑर्डर्स हुए. 3 मेंबर तो चले ही गए. तो अच्छा उसमें दूसरी बात यह है, उसमें मैंने देखा कि उनकी वालदा मोहतरमा और उनकी बेवा दोनों के वकील हैं. जिस केस में वकील अपीयर हो रहे हैं आपका मुनासिब नहीं है उसमें आना. वो उनको कोई बात है अर्जेंट एप्लीकेशन देना है वो दे सकते हैं. यकीनन वो हमसे ज्यादा बेहतर कानून समझते हैं और वो अगर देना चाहें. अब फिर उसको देखना होगा कि वो अगर इसके साथ लगाएंगे तो 3 मेंबर बेंच है. अब हम कर भी सकते हैं या नहीं. तो ये इसमें काफी वक्त मगर मैंने सरसरी तौर पे देखा 5 मेंबर बेंच. थैंक यू वेरी ये मच. बात तो आपकी हो गई. अब आखिरी बात बता दें या कोई और बात है? सर क्विकली ये कह रहा हूँ कि ये 7 दिन रह गए हैं इलेक्शंस में. ये सब मान रहे इस बात को. So what I'm saying is कि इसके बाद ठीक है सही ये मुनासिब बात इलेक्शन है. के बाद सारा अगर प्रोसेस इनकी हम सुन लें इनको सदर साहब को सुन करके और एक सदीकी साहब को आखिरी इतराज नहीं है अगर 7 दिन के बाद जी लगाने. सर एक आखिरी रिक्वेस्ट है. ये मैंने एक मई 3, 2014 को
मैंने एक आर्टिकल लिखा था, shall not quote for court reporters. This is just for the record. अगर आप चाहें तो इसको उसमें आप कहीं फंस तो नहीं जाएंगे? मैंने ये 2014 में ये आर्टिकल लिखा ये था सोच लीजिए आप कि फंस तो नहीं कोर्ट- जाएंगे उसमें? सर मैंने 2014 के लिखा था, जाहिर आप बात है फंस तो नहीं जाएंगे उसमें? सर जजेस और जर्नलिस्ट हमेशा हम अच्छा अगर आप सर माजी के फैसलों पे हम दोनों फंसते हैं, जो जो हम करते रहे माजी में। नहीं देखिए आप शायद फंस जाए इसमें। मैं आपको शर्मिंदा नहीं करना चाह रहा था कि आपको इसका हवाला दूं, मगर नहीं सर आपकी बात ठीक है, आई एम विलिंग टू फेस इट सर, नो प्रॉब्लम। अगर इसी को कर दें तो आई विल बी देयर टू फॉलो इट। ये देखिए जस्ट इसमें बहुत सारे बहुत अच्छे पॉइंट है। ये मेरा काम नहीं है इसमें मैं एग्री करूं या ना करूं, जी सर। मगर अभी हमें ढांचा चाहिए कि ये है कानून की अदालत, क्या हम ऐसा हुक्म कर सकते हैं या नहीं। राइट सर। फिर सवाल होगा कि कैसे करें। बस सर इस कोर्सिव माहौल में ज़ाब्ता इखलाक के ऊपर बात तो मेरे ख्याल में करना वैसे ही है कि किसी भी चीज पे अंगूठा लगवा लें आजकल सहाफियों से आप, क्योंकि इतने बड़े नोटिस जारी हुए हैं तो अब तो हमारे नुमाइंदे किसी भी चीज पे अंगूठा लगा देंगे। तो मेरे ख्याल में इसको डीलिंग करना बड़ा जरूरी है सर, इस केस को अलग करने नहीं और हम ज़ाब्ता इखलाक आप हम सुन लेंगे ना, शायद ये नाराज हो जाए हैदर वहीद साहब, उसमें आप पार्टी नहीं है, या तो आप पार्टी बनने की दरखास्त दें, क्योंकि अभी आप स्ट्रेंजर हैं टू द प्रोसीडिंग्स। सर मेरा नहीं नहीं ये देखिए ये हम आपको फिर भी सुन रहे हैं, मगर ठीक है सर, thank you very टेक्निकली much. स्पीकिंग हम आपको नहीं सुने। सर मैं अपने केस के हवाले से एक रिक्वेस्ट कर लूं, अगर वो मेरा केस जो अलग से लगा हुआ है किडनैपिंग वाला, उसको इस केस उसका नंबर क्या है? सर एसएमसी वो सुमोटो नोटिस था सर 2021 का है। ये नंबर आपको पता है? आई एम सॉरी सर, वो अब इतना पुराना हो गया है नहीं, कि ठीक है, हमें भी नहीं याद, नंबर- आपको भी नहीं याद सर। इंसान अपने केसेस के नंबर याद रखता है। तो बस चलिए, उसको आप ऐसा अगर उसे अलग से सुने सर, उससे इससे mix आप अपने करना- किसी साथी से पूछ लें या जी सर। कंप्यूटर में चेक कर लें, नंबर हमें बता सर मुझे दीजिएगा। सिर्फ ये खदशा है कि इस केस में अगर हम समझ गए आपकी सामने हम बात। जाते हम तो- समझ जी सर। आप कह रहे हैं कि काफी कॉन्ट्रडिक्टरी ऑर्डर ना हो जी, जाए। जी, जी। देखिए ये बात है ना, सर मुझे ये खदशा है कि जिन लोगों पे इल्जाम है या हम लोग अपनी स्टेटमेंट में लगा रहे हैं, वही लोग हमें जेआईटी में बुला के ये एफआईए के नोटिस में उसके अगर लिए तो तफ्तीश ये करेंगे, है ना आपको तो फिर ये- बड़ी कंट्रोडिक्शन हो जाएगी, हम पे प्रेशर होगा कि वो केस विड्रॉ कर लें, इस केस में आप जरा चेक करें। एक मिनट है जी, वो कह रहे हैं साल याद है पिटीशन फाइल आपको? कर रहे हैं। जी सर। साल याद है? 2021 सर। किसी को नंबर पता है आपके साथी बिरादरी में? क्रिमिनल ओरिजिनल 48 ऑफ 2020 सर। क्रिमिनल ओरिजिनल कंटेम्प्ट नोटिस होती है, ये तो कंटेम्प्ट नोटिस होती है। जी जी उसके साथ ही सर क्लब नंबर बताइए क्रिमिनल ओरिजिनल। क्रिमिनल ओरिजिनल 48 ऑफ 2020, ये कंटेम्प्ट 48 ऑफ 2020। 20 सर, उसके साथ एक क्लब हुआ था। अच्छा अब ठीक है, बस समझ गया आपकी सर, बात। thank बस you. बस समझ गए। Thank you very अच्छा ये एक बात जो, अच्छा आप कुछ फरमा रहे थे, हाँ क्या आप कुछ कहना चाह रहे थे? नहीं इनसे पहले आप प्रेसिडेंट साहब, जो प्रेसिडेंट आप हैं, जी सर हमारी तो रिक्वेस्ट सिर्फ ये थी कि कोर्ट ने कल ऑब्जर्वेशंस भी दी थी नोटिस की हद तक, लेकिन नोटिस अभी तक विड्रॉ नहीं हुए। आज भी काफी सारे दोस्तों को बुलाया गया। अब कोर्ट की ऑब्जर्वेशन है कि जनाब उसके लिए सीएमए फाइल होनी चाहिए थी। सीएमए फाइल आप ये हमारी बिल्कुल ऑब्जर्वेशन नहीं है। नहीं, कोर्ट ने आपको सिर्फ नाराजगी कानून की है, बता सर। ये ठीक है, कोई पिटीशन आपको फाइल करनी चाहिए ना। ये 184 के लिए आपसे बार बार कह रहे हैं कि ये अपीलेबल बन गई है। पिटीशन तो ब्रॉडर उसमें आ जाएगी ना। तो वो कर देना आप, उसमें कोई लेकिन फर्क नहीं पड़ता है, एक अभी दिन दो दिन में कर दें। अभी हमारी रिक्वेस्ट सिर्फ और सिर्फ जो काल आप नोटिस जारी हुए हैं, जिनके ऊपर प्रेशर है कि जनाब फौरी तौर पर आए। जिन दोस्तों ने अपनी बीट्स कवर करनी थी, किसी ने अडियाला जेल जाना था, अब आप मुझे एक सवाल का जवाब दे दीजिए सर। हमने अगर ऑर्डर पास किया तो हम ये बता दीजिए हम इस तनकीद से कैसे बचेंगे कि हमने कानून की खिलाफवर्जी कर दी? बता देना, हम कर देते हैं ना। जैसे इनसे हम पूछे थे हैदर वहीद साहब से कि भी अभी सेक्शन 3 हमने आपको भी पढ़ के सुनाया है, उस कमेटी के पास जाता है। अगर हमने ऑर्डर कर दिया तो आप ही लोग सबसे पहले तनकीद करेंगे कि आपने आइन और कानून पे का तहफ़्फ़ुज़ करने का हल्फ उठाया और खुद ही कानून तोड़ रहे हैं, जो कि खुद फुल कोर्ट ने कुछ दिन पहले ही उसको सराहा है। सर अभी अब मुझे समझ नहीं आता, मुझे अगर इसका जवाब दे दें तो मैं भी ऑर्डर कर देता हूँ। सर मैं इसी का रास्ता निकालने की कोशिश कर रहा हूँ कि अभी अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा कि वो अगर खुद कर लेते बहुत हैं ना, आसान है, नहीं, एक पिटीशन फाइल कर दो। सर वो बिल्कुल है। नहीं आप सर, देखिए, अगर- बात सुनिए सर साहब, आप पिटीशन फाइल करें, और वो जो कल इन्होंने अंडरटेक किया था अटॉर्नी जनरल ने, उसके बाद कुछ हुआ तो नहीं ना? सर, कल मेरी तो आप एक लोग- रिक्वेस्ट बात तो सुन लें पहले सर। प्लीज। एक वो उसको कंटिन्यू कर लेते हैं भैया, इलेक्शन नहीं हो रहे हैं, अब जब तक इलेक्शन
इलेक्शन तक का जितना टाइम हम है कर सके हमने वो आप रोकते हैं, एक अंडरटेकिंग दे उनको दी। बोले भी रोक दे उसको, 4-5 दिन की बात है, उसके बाद फिर आप यही रिक्वेस्ट है देखिए, सर। वो ऑर्डर में हम नहीं लिख सकते क्योंकि हम समझते हैं क्या चीजें हम कर रहे हैं। चलिए, आप क्या कहना चाह रहे थे कयूम साहब? ये सर सवाल तो एक ही है कि क्या सहाफियों पे कानून लागू होता है या नहीं होता है? क्या जर्नलिस्ट पे कोई कानून लागू होता है या नहीं होता है? ये भी जर्नलिस्ट पे देखने वाली- बहुत कानून लागू होते हैं। तो हम भी सिटीजन है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो है वो बिल्कुल, हमें इसीलिए चाहिए। जहाँ आपकी पिटीशन में तो हमने फौरन ऑर्डर कर दिए। जी हाँ। अब जो दूसरे मसले आ रहे हैं वो हमारे सामने अगर कोई ले आए ना फॉर्मल तरीके से तो अच्छी बात होगी। हमने तो इनफॉर्मली इनसे बात करके अंडरटेकिंग भी दिलवा दी। तो अब आप अपना केस में कोई बात और करना चाहते हैं तो बताइए। जी हाँ, इसमें क्योंकि अभी ये मीडिया रेगुलेट करने के हवाले से कर रहे थे बात और सारी चीजें, वो जब आएंगे तो उस पे एक बहुत ज्यादा हमारे साथ एज एन ऑर्गेनाइजेशन हमारे साथ क्या होता रहा, वो एक टेस्ट केस है। अदालत जरा उसके भी फैक्ट्स देख ले कि इस तरह से जर्नलिस्टों को जो कुछ हुआ जी वो हम देख रहे हैं ना। अब आप कुछ और मशवरा दे दें कि ये ऑर्डर पास कर दें आपके केस में, वो हम कर सकते हैं। नहीं, वो तो जाहिर है अभी वो चीजें सामने आएंगी तो फिर हम उसके बाद आगे चलेंगे, क्योंकि फंडामेंटल हमने उनको 2 हफ्ते उन्होंने उन्हें कहा 2 हफ्ते में आते हैं तो 2 हफ्ते में देखें क्या कहते हैं फिर। बिल्कुल। मगर उसमें कोई और पहलू रह गया। एक बात निशानदेही की कि अफसार आलम साहब का नाम रह गया था, जी। वो बस हम ऐड कर देते हैं। और कोई बात है तो बता दीजिए। बाकी सब जो चीजें सामने आएंगी, कुछ चीजें थी जो आपके गोशे गुजार करनी थी। जब हम दूसरों को कहते हैं ना कानून पे अमल करो, नहीं, बिल्कुल ठीक तो बात है। अदालत तो सबसे ज्यादा करना चाहिए ना। तो इसलिए आप शायद समझें कि वो हम फलां ऑर्डर नहीं कर रहे हैं, फलां ऑर्डर नहीं कर रहे हैं, मगर अब हम भी कानूनी किताबें हैं। नहीं, कानून गलत है डेफिनेटली कोर्ट हवा में तो कोई ऑर्डर नहीं कर सकती, जाहिर है चीजें आएंगी। तो कम से कम जो है वो इतना जोर कर दिया जाए कि जो नोटिस हैं जो इलेक्शन के बाद तक जरा उसको हाँ, ये वैसे Stand still कर दें। जरा देखिए, बहुत से लोगों को बहुत सी नोटिस आई हैं जी। और उन लोगों ने तो कोई इतराज नहीं किया जाने के लिए किसी इदारे में। बिल्कुल। अब शायद आप बात समझ गए हो, शायद ना समझे हो। तो जब उन्होंने अंडरटेकिंग दे दी आपको, फिर आपको मसला क्या है मुझे समझ नहीं आ रहा है। वो अंडरटेकिंग करवाई उनसे, हमने देखिए हमने मोहतात तरीके से ऑर्डर नहीं किया था। हम समझते थे हम क्या कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात है। ठीक है, बहरहाल कोई भी हम पे तनकीद करे में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि फिर हमने आइन और कानून पे चलेंगे। अब इनको दोबारा कह देते हैं यू स्टैंड बाय योर अंडरटेकिंग। कब तक की आपकी अंडरटेकिंग? ये ओपन एंडेड अंडरटेकिंग है। आवाज बुलंद, आप थोड़ा सा ऐलान कर दीजिए अपनी अंडरटेकिंग का ताकि सब सुन My लें। lord, my lord, undertaking as recorded in paragraph 3 of yesterday's order stands. सर That will वो continue. अंडरटेकिंग सर दूसरी हद तक है। वो अंडरटेकिंग ये है कि किसी की क्रिटिसिज्म के ऊपर उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। हम ये चाह रहे हैं कि आप इलेक्शन चाह रहे हैं ना बहुत सारी सर चीजें। रिक्वेस्ट है सर नहीं, कोर्ट से। रिक्वेस्ट नहीं करें ना, आप मुझे कानून का हवाला दे देना। सर एक अब देखिए, आपके साथी आपके साथ खड़े हैं। सर वो वो एक साथी हट गए उनसे कि वो ब्रांच भी फाइल नहीं हुआ, वो प्रोसीजरल मैटर है। नहीं सर, वो अच्छा वो इतने नाराज हो गए, उन्होंने कहा मैं तो इससे दूर ही हो जाता हूँ क्योंकि प्रोसीजर कंप्लाई नहीं हुआ। अब हम आपसे अब आप कह रहे हैं कि कानून को ना नहीं, अप्लाई करें। सर मुझे 1 मिनट दीजिए। प्लीज आप पता नहीं क्यों नहीं आप अपना व्हाई डोंट यू हेल्प योरसेल्फ। सर शायद मैं अपनी बात समझा नहीं पा मैं रहा। समझ गया हूँ, आप सिर्फ बता दें कौन से कानून के तहत हम ये कर रहे हैं बस। सर अटॉर्नी जनरल साहब ने कल के नोटिस जो थे हमें कहा गया कि हमने विड्रॉ कर लिए, दोबारा जारी करेंगे। मुझे नहीं पता, मेरे सामने नहीं चाहिए सर, मेरे सामने ये बात बिल्कुल नहीं हुई है। नहीं, दोबारा जारी करेंगे। Notices है, उसका एक प्रोसेस है। So अगर वो withdraw करना चाहे उनकी सर विड्रॉल के मतलब है बात सुन लेना। कल की डेट। अरे हाँ ना, वो कल की डेट तारीख जो थी वो गुजर गई, तो नई डेट आपको देंगे ना। यही वो बात कह रहे हैं। यही बात हम कह रहे हैं सर, जितने नोटिस अब तक जारी किए गए हैं वो तमाम नोटिस इलेक्शन के बाद का बुला लें साहब। if I may, बस इतनी रिक्वेस्ट है। if I may, my तमाम lord. लोगों को इलेक्शन के बाद if I may. बात तो करने Yesterday- Attorney General has right of audience in the courts of Pakistan before every lawyer even. जी My lord, yesterday I had given this undertaking, which is duly recorded in your order. and it continues. Yes, it continues. It is not time related. Yesterday, it was erroneously reported in national media. I also can't- found out देखिए, that the notices have been withdrawn. Notices can't just be withdrawn. वो आप There's a जो मर्जी process. करें हमें नहीं पता। So वो नहीं डेट होता में भी है। चेंज फॉर द न्यू डेट हुआ, Yes, मीटिंग जो भी yes, होगी उसमें। yes. So the undertaking. देखिए, I've been repeatedly requesting the media
At least I don't sit on orders, issue them after months. We issued the order yesterday. I mean, late hours, we sign it. Even we would try to take some time, कि कोई typos वगैरह ना हो. But we issue it for this very reason. Please read the order. If somebody doesn't even bother, I mean, you know, the standard of everybody likes to be more holier than thou. If journalists don't bother to go on the website, and it was uploaded on the website at pretty early in the day, and the following day the newspaper still misrecords it, we can't help it. Because so much happens when you're talking. I mean, you are saying something, he's something, someone may think this is the order of the court. We may ask a question, doesn't become the order of the court till we dictate the order of the court. So I keep requesting the journalists, please read the order. You can criticize us that there was no order uploaded, so we understood this. But that is not applicable when, I don't know, I try to dictate all orders in court and we try to sign out the orders, uplink them where we are important orders which have people are interested in. Not every order gets uploaded for obvious reasons. So इतना अगर कोई ज़हमत नहीं करे, मैंने तो पढ़ना ही नहीं, मैंने काम ही नहीं करना है, तो अब क्या करें हम? I can't force someone to do it. शहजाद साहब, ये जरा हमें थोड़ा सा आप भी हमें guide कर दीजिए इस बात पे. What are your views on this? Since we requested you. As expressed yesterday, the Supreme Court Bar Association has always maintained that criticism on judgment and a fair comment on the judgment is welcome, because that actually helps us, all of us, improve. But if we come out with stories which are absolutely out of the blues and have no merit in them, then obviously that has to be checked. And particularly the new medium that we have, that vlogs and that YouTubers, I don't know what to do with them, but they are actually saying anything that they want to say. And that cannot be permitted. But that has to be somehow checked. And especially if we come out with fantastic stories about our honorable judges, that is not tolerable. And that is what we maintain. That is what we will always maintain. Criticism is welcome. They can always criticize the judgment. But beyond that, it is uncharted territory. They cannot be allowed to go there. The one thing which nobody has addressed, maybe, is the truth. It's when you talk about the freedom of the press, does it mean it can print lies? I don't know. I'm just posing these questions. मैं से इसका एक सेकंड साहब, आप जरा बात करने देना. So one aspect has not been addressed at all, and I've been advocating. I mean, I keep saying truth will set us free. It's a fundamental pillar of not just Muslim faith, but virtually of
This was a wrong story. And to my And because, I mean, you know, say